ऑल राइट। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मई जून 2020 पेपर वन वेरिएंट टू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर वन, on the axis below sketch the graph of this। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। what is the first thing we should find? Showing the coordinates of the points where the curve meets the axis। तो सबसे पहले ऐसा करो, मॉड्यूलस इग्नोर कर दो। मॉड्यूलस अप्लाई करने का मतलब है हम इसको बाद में रिफ्लेक्ट कर देंगे, बट इग्नोर द मॉड्यूलस। और मुझे बताइए, y में जीरो पुट करने पर x की तीन वैल्यूज क्या आएंगी, x इंटरसेप्ट क्या आएंगे? 2 -1 -2। ठीक है, 2 -1 एंड -2। सो लेट्स मार्क these points, 2 -1 and -2। And now let's find out the y-intercept as well। x में जीरो डाल के y की वैल्यू कितनी आएगी? You can use calculator if you want, ignoring the modulus sign। -4। -4। Sketch the graph। क्यूबिक इक्वेशन में नॉर्मली दो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे होते हैं, टू टर्निंग पॉइंट्स। ओ, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, what mistake do the students make? They think that this is your turning point। this is not the turning point। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप यहां से घुमाएंगे तो फिर ये सिमेट्री नहीं बनेगी। there will be no symmetry and there has to be symmetry। the sketch is not done as yet। अभी हमें मॉड्यूलस अप्लाई करना है और नेगेटिव पार्ट स्केच का रिफ्लेक्ट करना है। सबसे पहला नेगेटिव पार्ट मुझे ये नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके यूं जाएगा। उसके बाद ये वाला मैंने मिटा दिया। उसके बाद ये वाला भी नेगेटिव पार्ट है। प्लीज रिफ्लेक्ट दिस एज वेल। ये यू करके रिफ्लेक्ट होगा। जो वाई इंटरसेप्ट पहले -4 था वो अब 4 बन जाएगा। इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच का मतलब है यहाँ पे। Erad, let me know when you are done with the sketch। I'm done। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मूसा, ये कौन सा टॉपिक है? सर, रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज।
प्लीज राइट डाउन किसका रेट हमें दिया हुआ है और किसका रेट हमें फाइंड करना है। We are given dr upon dt, which is 0.5, and we have to find dv upon dt. r की वैल्यू दी हुई है 0.25। सबसे पहली चीज हम रेट ऑफ चेंज में क्या फाइंड करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड? dv upon dr. Yes, the gradient. So please differentiate your equation and find out the gradient. R के अंदर R की वैल्यू इनपुट कर दो एंड टेल मी द ग्रेडियंट। कितना आएगा ग्रेडियंट? Pi upon 4. पाई अपॉन 4। The formula for rate is going to be dv upon dt is equals to dv upon dr into dr upon dt. So what is my rate of change of volume in terms of pi? Pi upon 8. And what should be the unit? Centimeter cubed per second. Yes, centimeter cube per second. Volume upon time. Question number 3. Binomial. In case if you do not know the formula, here it is. So I'm going to give you 1 minute for the expansion.
Sir, your mic is muted. So the expansion of the second bracket is going to become x square minus 2 plus 1 upon x square. The question is asking us to find the term independent of x. Independent of x का मतलब वो term जिसमें कोई x ना हो. तो हम 4096 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2, -2. -2 और -384x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Nothing. नथिंग. और 15x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 upon x square. 1 upon x square. So what are we going to get? Negative 4096 multiplied by 2 minus 8192 plus 15. I am getting minus 8177. All right, next question. Permutation and combination. We have to make a 5-digit number, but how many digits are these? 6. So out of 6, if I have to make a 5-digit number, मुझे क्या लिखना चाहिए? पहले तो मुझे बताओ digits हैं, is it permutation or is it combination? Permutation. Permutation. So out of 6 digits, I have to make a 5-digit number. 65. 720. How many of the numbers found in part 1 are not divisible by 5? How do I check whether a number is not divisible by 5? A 5-digit number, which means 5 boxes. If the final box does not have a 5, then it's not divisible by 5. Okay, so the final box should have either 1, 2, 3, 7 or 8. इन 5 में से कोई एक आ सकता है लास्ट बॉक्स में, राइट? 5p1. So now how many digits are left and how many do I have to arrange? 5p4. Yes, 5 are left and I have to arrange 4. 5p4 into 5. $600. Part 3. How many numbers in part 1 are even and greater than 30,000? Even भी होना चाहिए, greater than 30,000 भी होना चाहिए. Okay, there might be a problem here.
30,000 से बड़ा होने के लिए we can have 3, 5, 7, 8. But the problem is 8 could also be in the last box. तो हम ऐसा करते हैं, यहां से 8 हटा देते हैं, सिर्फ एक 8 का ही मसला है ना. लेट्स रिमूव 8 फ्रॉम हियर. तो आप लास्ट बॉक्स में क्या क्या आ सकते हैं? either 2 or 8. So 3 into 2 into how many digits are left and how many do we have to arrange? 4p3. 4p3. 144. Now in the second condition error, what can I place in the first box? 8. 8. So now what can I place in the last box? Only 2. Only 2. Shouldn't you also write 357 in the first box? Why? 3, 5 और 7 वाली कंडीशन तो मैंने कर ली ना यार. That is done. Oh, okay. वरना अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन मेक different conditions in which you can every time place one digit. एक बार 3 आएगा, फिर एक कंडीशन में 4 आएगा, फिर एक कंडीशन में 5 आएगा. 4 तो है भी नहीं, सॉरी. एक कंडीशन में 3 आएगा, फिर अगली में 5 आएगा, फिर अगली में 7 आएगा और फिर आखिरी में 8 आएगा. यू कैन मेक 4 कंडीशंस if there is any confusion. One 168. Next part. The number of combinations of n times taken 3 at a time is 6 times the number of combinations of n items taken 2 at a time. Okay. N items taken 3 at a time. What does this mean? NC3. NC3 is, इसका मतलब क्या होता है? How do I convert the word is into math? Equals to Is equals to 6 times n items taken 2 at a time NC2. Now binomial expansion के अंदर हमने पढ़ा था NC1, NC2, NC3 के formulas. Era, do you remember the formulas? yes. NC1 is N upon n, 1 factorial. NC2 is n minus 1 upon 2 factorial, and NC3 is n minus 1, n minus 2 upon 3 factorial, and so on.
So apply the formulas, please. Three factorial is 6. So instead of writing 3 factorial, I am directly writing down 6. And 2 factorial is 2. So please start telling me what can I cancel out with what? The 6 and the 2. And N minus 1. n with n and n minus 1 with n minus 1. So the value of n is going to be 20, right? Question number 5. Functions. Find the range of f. अच्छा रेंज निकालने के लिए आप डायरेक्टली बस ऐसे नहीं रेंज निकाल लेते, आपको पहले चेक करना पड़ता है कि आपका फंक्शन कैसा है, बिकॉज इफ इट्स क्वाड्रेटिक तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट होगा। इफ इट्स नॉट क्वाड्रेटिक तो फिर आप डोमेन की पहली वैल्यू पुट करें, डोमेन की आखिरी वैल्यू पुट करें और देख लें वाई की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं और रेंज कितनी। द प्रॉब्लम इज दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए उसका इस फॉर्म में होना जरूरी है। So how do I convert this into this form? It's almost into this form, in this form, but the only problem is this 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता यहाँ पे। अब मैं क्या करूं? I should take 2 common from this bracket. पर प्लीज याद रखिएगा जब आप इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट पे तो स्क्वायर लगा, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 पे भी स्क्वायर आएगा। Eraj, what should I write inside the bracket? X plus 3 upon 2. ठीक है। Now can you tell me what is the turning point? Minus 3 upon 2, 1. 1. Why 1? टर्निंग पॉइंट होता है h, k. What is k? Oh, 0. 0. ये तो टर्निंग पॉइंट आ गया। नाउ लुक एट योर डोमेन। क्या इस डोमेन के अंदर टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं? डज टर्निंग पॉइंट लाई इन दिस डोमेन? No. नो। तो हमारी सारी मेहनत जाया हो। Now let's put the smallest value of x and find the value of y, and then we'll put the largest value of x and we will find the value of y. तो सबसे छोटी वैल्यू x की जब मैं 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा? 25. No, 9. 9। सबसे बड़ी x की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ इफ इट सेज ग्रेटर देन 0? Infinity. इंफिनिटी। जब मैं x में इंफिनिटी पुट करूंगा तो y का आंसर भी क्या आएगा?
infinity. इन्फिनिटी। तो मेरी रेंज क्या बनी? 9 से लेके इन्फिनिटी। 9 से लेके इन्फिनिटी तक तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा f इज ग्रेटर देन 9 और f ऑफ x इज ग्रेटर देन 9। एक्सप्लेन व्हाई f हैज एन इनवर्स। सिर्फ किन फंक्शंस का इनवर्स होता है? 1 to 1 or many to 1. Yes, because it is a one-to-one relation. For the given domain. ठीक है, for the given domain लिखना जरूरी है। Now find the inverse. पहले y से इक्वेट करेंगे and then we will make x the subject. How do we decide कि प्लस माइनस में से कौन सा साइन आएगा और कौन सा साइन नहीं आएगा? The inequality in the domain tells us, अगर डोमेन में ग्रेटर देन है तो ऑब्वियसली प्लस आएगा, लेसर देन होता तो माइनस आता। State the domain of f inverse. How are we going to find the domain of f inverse? The range of f of x is the domain of f inverse. Excellent, very good. और f of x की रेंज हम निकाल चुके थे, वो ही f इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन किसकी वैल्यूज होती है? X. x, so x is greater than 9. Given that g of x is equal to ln x plus 4 और डोमेन भी दी हुई है, फाइंड f g of x is equals to 49, यानी कि g को उठा के f में डाल दो। g को उठा के f में डालेंगे, कहाँ गया f? ओके, ये g उठा के हम f में डालेंगे और इक्वेट कर देंगे 49 से। So the first step is going to be to bracket, I don't think we should put a bracket here. I should write 2 ln x plus 4 plus 3 whole bracket square is equal to 49। तो भाई सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा दो दोनों साइड्स पे। Do not forget to put a plus minus sign. Do not forget, it is asking you for the exact solution, ठीक है? Erat, can you tell me why am I going to reject the negative sign over here? Because x is greater than 0. Because x is greater than 0.
और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन, इट डज नॉट से सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस नहीं लिखा हुआ। ln की बेस वहां शिफ्ट कर देंगे। So the final answer is going to be e squared minus 4. Done? Yes, sir. Okay, question number 6. Please read the question thoroughly first. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए का कोऑर्डिनेट। वेयर इज पॉइंट ए? X-axis. X axis, which means the value of y is going to be 0. So in this equation of the line, put the value of y 0 and tell me what value of x are you going to get. Negative 2.5. Now let's find the coordinate of B. What about point B? How will you find the coordinate of B? Equate the two equations. Yes, solve them simultaneously. Two x plus y is equals to negative 5 is the first equation, and xy plus 3 equals to 0 is the second equation. Can you tell me क्या x की value आ रही है और क्या y की value आ रही है? The value of x has to be somewhere between 0 and 1. 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए x की value. X is 0.5. 0.5. ओके, और y कितना आ रहा है यार? -6. -6, ठीक है। Part B. Find the area of the shaded region, leaving your answer in this form. चलिए ये फॉर्म तो हम बाद में देखते हैं, पहले ये चेक करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा कैसे। What is the best strategy? The best strategy is to make dotted lines from the point of intersection. You also need to keep in mind कि आपका सारा का सारा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, तो अगर वो नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव करके लिखोगे। बट हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? यहां से लेके यहां तक
हम किसका एरिया कैलकुलेट करेंगे? Triangle. Triangle. And from point B to point C, what are we going to do? Definite logarithms with a limit of 1 to 0.5. Definite integral, right? Yes, sir. We will integrate the curve. We will integrate the curve with the limits 0.5 to 1. ठीक है, तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। मैं यही कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं वहां नहीं कर रहा क्योंकि फिर बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ती है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हाट इज द बेस? -2.5 से लेकर 0.5 तक कितनी बेस बनती है? 3. 3. And we already know the height. Obviously, we can't write -6, we will write 6. तो ट्राइंगल का एरिया तो आ गया 9, इसको हम A1 कह देते हैं। नाउ लेट्स फाइंड A2। We will integrate the curve with the limits 0.5 to 1। कर्व को कैसे इंटीग्रेट करें? ये तो अजीब सी इक्वेशन है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? Make y the subject. मेक y द सब्जेक्ट, तो +3 वहां जाके -3 हो जाएगा और y आ जाएगा -3/x। So we will be integrating -3/x। तो अगर मैं -3 को इंटीग्रल के बाहर कर दूं तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ 1/x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? One. Integration of 1/x is 1. Okay, that is surprising. अच्छा बताओ 1/x किसकी डिफरेंशिएशन होती है? वन अपॉन एक्स ln x की डिफरेंशिएशन होती है। वैसे भी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन इज देयर इन द न्यूमरेटर। तो जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होती है तो उसका आंसर ln x नहीं होता? होता है या नहीं? Yes. Yes. So let's apply upper limit minus lower limit. I hope you know that ln1 is 0. तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3 ln 0.5। सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा पेपर? वो समझता है मेरा आंसर तो पॉजिटिव आ गया, जबकि कर्व तो एक्स एक्सिस के नीचे था, उसको नेगेटिव होना चाहिए था। तो वो कहते हैं चलो अच्छा हुआ पॉजिटिव आ गया। अब मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को इसमें ऐड कर देता हूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। व्हाट मिस्टेक इज द स्टूडेंट मेकिंग? ही डजंट नो दिस वैल्यू इज नेगेटिव। कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे था कर्व। दिस हैज टू बी नेगेटिव। इज योर कैलकुलेटर गिविंग अ नेगेटिव आंसर? Yes. तो फिर मुझे इसको क्या करके लिखना चाहिए? हाउ डू आई मेक दिस पॉजिटिव? Modulus. मॉड्यूलस तो नहीं लगा सकता ना यार, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा के इसमें कैसे ऐड करूंगा? यू विल राइट
-3 ln 0.5। आप यहां माइनस लगा देंगे। एक तरीका तो ये है, अब ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपका आंसर आ रहा है 3 ln 0.5, तो इसका मतलब है आपका आंसर आ रहा है 3 ln 1/2। Your answer is 3 ln 1/2. How can you further simplify this? How can you simplify ln 1/2? You could break it apart into two lns. Into 2 lns, or I can bring 2 in the numerator and make the power of 2 -1। Yes. वो -1 पीछे जाएगा और ये बन गया -3 ln 2। अगर ऐसे स्टूडेंट लिखता तो फिर उसको पता होता कि हाँ यार मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस के नीचे था, तो फिर वो इसको पॉजिटिव बना देता। इसको पॉजिटिव बना के वो क्या लिखता? वो लिखता 3 ln 2। You see, you put this in your calculator, the calculator will give you a negative answer. You will make it positive. Now add both the areas. Add both the areas. And see if your answer in that form. 11.1. In this form. कैसे आएगा उस फॉर्म के अंदर एराद आंसर? We can take the power rule. Nine plus ln 8, right? All right, question number 7 you will do on your own, and we will start with question 8 in the next class. That's it for today. Allah Hafiz.